Hello to all. Now we are started here how to do the docking studies. सबसे पहले आपको डॉकिंग स्टडीज़ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ व्हाट कि आपको जो आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं एंजाइम है जिसको आपको प्रोटीन डेटा बैंक से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर लेना है. हम यहाँ पर आपको एक रेफरेंस कंपाउंड की डॉकिंग करके दिखा रहे हैं. हमने एक ऑलरेडी हमने DHFR इनहिबिटर जो है DHFR का एक टारगेट फिक्स किया हुआ है. दैट इज़ हमने प्रोटीन डेटा बैंक से इसे एक्सेस कर लिया है. हमने जिस कंपाउंड की या जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमको जिसका हमको डॉकिंग करना है लिगेंड का, हमने उसको ड्रॉ कर लिया है. और इसे ड्रॉ करने के बाद में हम इसे 3D पे सेव कर लेते हैं .pdb फाइल में. दैट इज़ .pdb1 के नाम पे हमने किया है और ये हमारा क्या है PDB स्ट्रक्चर है. नाउ द फर्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले अपना जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसे ओपन कर लीजिए. ओपन करने के बाद में आपको इस पर रेसिड्यूज़ दिखेंगे. इस पर आपको सबसे पहले जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो रेसिड्यूज़ में जाइए. रेसिड्यूज़ में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी. फर्स्ट फोल्डर दैट इज़ व्हाट अमीनो एसिड. द सेकंड वन इज द miscellaneous compound and water. Sometimes it contains the heterocyclic residues also. It means some heterocyclic residues already docked in that particular protein. So the work started from here. First you remove all the miscellaneous compound. What is the procedure of that? To select all the compound and just delete it. Just delete it. Now the second step is you remove all the water molecule from the residue. Just delete it. Now it contains only amino acid. Why this process is important? If your protein contains the water or other miscellaneous compound, so it hampers the docking. Okay. Now that is the preparation of protein. It is saved in the form of if you want to save it, you just save it. Now you add in this protein you add the hydrogen. Now again save in the form of hydrogen. Okay, that is your protein preparation, the first part. Okay, now the second part is select the amino acids. All the amino acids that are selected by simply Control S, Control All and Control S. आप क्या करेंगे, सारे के सारे को आप Control All करके सेलेक्ट कर लीजिए. नाउ क्लिक राइट हैंड क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेगा, सम ऑप्शंस आर देयर. यू जस्ट select the option make a group from the selected residues. Make a group from the selected residue. So you go, if you want to give the name of this residue or the receptor, you just go one reference. Okay, select the binding site because we want to dock here, so select the binding site. Okay, the second step, your ligand compound, just click it and you go for the option clean the geometry. Just clean the geometry. Now again select the residue in that miscellaneous compound. Just select it and make a ligand group from this residue. Make a ligand group from this residue. Select it. Now it is selected. Go into the dock calculation. Set up a dock calculation. Just see, one is your ligand and binding site is one reference. The next whole system just you select the binding site bounding box, calculate the size because it is a random docking, just flexible docking you are performing here. So you select calculate the size, and that is the docking engines. So OrganSnap calculation type, that is the dock calculation. Ligand type is flexible ligand. So start it here. You started the docking of your compound. It takes some minute to some hours. Okay.
you see your compound has moving into the whole side or the whole box. Now the docking is completed. Best ligand pose energy is minus 7.71 kilocalorie per mole. Just go into the view and save the file. Save as the text file 1 into that box, and just save it. It is important because sometimes it needs, and some research papers, and wherever you sending your paper, they want this. Okay, the next part is started here. To select the group in view, hide protein, again make a binding site for this group, select this. It is what now the next step, it is very important, show the hydrogen bonds. See here, it shows the hydrogen bonds. Just you click it, you move it where is the direction, and if now the next step, which compound or which residue is bind with the which type of residue, just click it, show the hydrogen bond information. It gives the hydrogen bond information. See here, 2159 oxygen in residue 135 SER serine. It is your residue which is from the hydrogen bond here, and what is the bond distance? It is 2.900. You see, आप इस तरीके से सारे के सारे कंपाउंड्स के कितने भी आप उसमें कौन कौन से एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम दी माय साइड. दिस इज ओवरऑल डॉकिंग फ्रॉम दी आर्गस लैब. थैंक यू वेरी मच.